वहां पर recursion makes it rule. So most of the divide and conquer problems we try to solve using recursion. तो दैट इज रीजन आई टोल्ड यू दैट मैं पहले आपको लीनियर सर्च बताता हूँ, आपको बाइनरी सर्च बताता हूँ, देन विल गो ऑन अ रिकर्शन. वी विल टेक अ ब्रीफ लुक एट द रिकर्शन concepts. आई एम वेरी श्योर आप लोगों ने इससे पहले पढ़े होंगे बिफोर यू कम डाउन टू द CDAC course, so you must be knowing that. I will revise it. If you have any questions, this is like an ideal time that where you should be asking that. We will sort out the issues of recursion, understand recursion, and once recursion is clear, then we will try to rewrite this algorithm once again. We will try to write the binary search algorithm once again, but now in a recursive manner. So is it what we are going to do? Yes, absolutely, and that is the reason recursion is there. Let's move on. So what is some very basic stuff of recursion? Or recursion simply means that a function calling itself is called as a recursive function. Absolutely. जब कभी किसी फंक्शन के अंदर खुद को ही कॉल दिया गया है, इट इज a recursive function. Please note, writing recursive function is very important skill. अगर आप लोग डेटा स्ट्रक्चर में कुछ आगे जाके करना चाहते हो, अगर डेटा स्ट्रक्चर में आप लोग आगे जाके कुछ करना चाहते हो, please understand that writing recursive functions is very much required. There are many problems which can be solved using recursion. Just now I told you the technique name. The technique that we see is a divide and conquer technique. So the divide and conquer technique, as I said that all the problems we try to solve it using recursion. तो binary search is not the only algorithm. आगे जाके quick sort आएगा, आगे जाके merge sort आएगा. Tree के almost सारे algorithms they are recursive algorithm. So at that time, every time we may not go and invest our time to understand what is recursion and etc etc. So right now I'll just focus on what is recursion once, और वहां से आगे we will continue. सो अगर आपको रिकर्शन रिलेवेंट जो भी क्वेश्चंस होंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टीच रिकर्शन, उसमें आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व होने चाहिए. अगर कुछ प्रॉब्लम रह जाते हैं तो लेट मी नो, वी विल टेक अप देम नाउ, नॉट प्रोबेबली एवरी नाउ एंड देन, राइट? सो हाउ डू वी राइट अ रिकर्सिव फंक्शन? To write recursive function, there are two things very important. Which two things very important? One, explain the process or a formula in terms of itself. So whatever problem statement is given, you please try to analyze the problem statement and you see that क्या इस problem statement को हम लोग उसी के terms में explain कर पाते हैं, is one. And then you need to find out the terminating condition. A terminating condition many time also referred as a base condition. Base condition. Please note, let me focus on to the two halves. The first half, the first half where I want to focus on how to write recursive functions, and the second half how recursive function get executed. Please do not mix up. I'll cover both. I will cover both. लेकिन अभी जो मैं आपको बात कर रहा हूं, यूजुअली ऐसे होता है कि जब कभी रिकर्शन चलता है, जब कभी रिकर्शन चलता है, तो व्हेन यू आर टीचिंग स्टूडेंट्स हाउ टू राइट, सो दे आर थिंकिंग हाउ दिस इज एग्जीक्यूटिंग. And when you start explaining them how this is executing, then he says that लेकिन सर लिखना कैसे है? These are two different things. Do not mix up. अभी के लिए the first focus is that how to write recursive functions, and then the second focus is that how how the recursion is called. That is the second step that we will see it separately. So right now just focus on one part. What is that? How to write the recursive functions. So how to write recursive function? Whatever problem statement in your hand, divide, look at the problem statement. Look at the problem statement and try to explain it in terms of itself. Try to explain it in terms of itself. Sir, example, the most common example I'll take it first. You say factorial. So you always say that n factorial is equal to n into n minus 1 factorial. Is it? Yes, absolutely. N factorial is equal to n into n minus 1 factorial. And if this is a problem statement, so you say that 4 factorial, if you just count it, I'll just go ahead. You go like a 4 factorial. 4 factorial is nothing but 4 into 3 factorial. Okay, that is good. And then 3 factorial is equal to 3 into somewhere, let's say 2 factorial. Or you continue further, 2 factorial is equal to 2 into 1 factorial. Oh wait, or for that sake 1 factorial is equal to 1 into 0 factorial. Or you continue further, 0 factorial is equal to 0 into minus 1 factorial.
Is it so? Is it so? Oh, not at all. So 0 factorial is not 0 into minus 1 factorial. I said that 0 factorial is always 1. Now please don't ask me who told you. This is what a basic mathematics. So the mathematical rule says that this value is constant and you cannot have a factorial of a negative one. So I'm saying that this one is nothing but the base condition. So if you find that, explain the process in terms of itself when you're talking. I'm talking about this. And the second thing, when you say base condition or terminating condition, I'm talking about this. At the beginner level, listen, at the beginner level, we always say that, so how to find out terminating condition? The beginner level, you find a terminating condition by doing some paperwork. By doing some paperwork and understanding, okay, 4 factorial is equal to 4 into 3, 3 factorial is 3 into 2, 2 factorial is 2 into 1 factorial is 1 into 0 factorial, and 0 factorial is equal to 1, where after doing paperwork you realize that, oh, that is the end, that is the end. So यहाँ पर जो बेस कंडीशन या टर्मिनेटिंग कंडीशन हम लोग ढूंढा था, वो हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप हम लोगों ने अंदर तक जाके ढूंढा था. तो सर इन रियल वर्ल्ड प्रैक्टिकली हम लोग ऐसे करते हैं. सी जिन अल्गोरिदम्स के लिए पॉसिबल है, जहां पर ऑन पेपर पॉसिबल है, आप लोग उसको ऐसे कर सकते हो. बट बट जब आप लोग कॉम्प्लेक्स अल्गोरिदम्स में जाओगे, इन कॉम्प्लेक्स अल्गोरिदम्स, दिस इज कंसिडर्ड एज क्वाइट स्टूपिड प्रैक्टिस. अगेन मैं कह रहा हूँ बिगिनर लेवल पे दिस इज गुड. सो अभी अभी आप लोग शुरुआत कर रहे हो, सो इट इज वर्थ, यू गो बैक, यू डू द पेपर वर्क, यू कम डाउन टू द लास्ट लास्ट लेवल कि जहां पर हम लोग कुछ नहीं कर सकते. सो दैट इज ओके, दैट इज एक्सेप्टेबल. हाउएवर, जब आप लोग एक्चुअल डेटा स्ट्रक्चर में आगे जाके अल्गोरिथम्स लिखना चाहते हो, बड़े बड़े अल्गोरिथम लिखना चाहते हो, देन दिस इज नॉट द वे दैट यू शुड फाइंड द बेस्ट कंडीशन. अभी जो मैं बता रहा हूँ उसको ठीक से सुनना. देन सर व्हाट इज द वे टू फाइंड आउट व्हाट इज बेस्ट कंडीशन? In that, you consider the problem statement, you consider the recursive formula, and on that recursive formula you think of the smallest input that you can give, where where the formula doesn't hold true. What I say that recursive formula, ये तो recursive formula आपको दिख रहा है. मैं क्या कह रहा हूँ कि don't do the paperwork and then come down to that. Look at the recursive formula and start thinking. You need to use your intuition कि what could be the smallest input for which this particular formula doesn't hold true, and then you realize that, oh, 0 factorial has to be 1. A 0 factorial is equal to 1 because 0 is the smallest value whose factorial can be calculated. I hope you got the point. If you have not got the point, I have got another example. Another example, you say that x raised to y is nothing but x into x raised to y minus 1. So what again it is? Again what it is? I'll just repeat it. Let's say you are trying to calculate 2 raised to 3. You are trying to calculate 2 raised to 3. So 2 raised to 3 is 2 into 2 raised to 2. I hope you understand. 2 raised to 2 is equal to 2 into 2 raised to 1. Yes, 2 raised to 1 is equal to 2 into 2 raised to 0. Okay, that's good. And 2 raised to 0, I guess यहाँ से आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है, इसको आपको 2 raised to minus 1 करने की जरूरत नहीं है. This is something I see the base condition. So again, by doing the paperwork, I can come to that. However, I'm saying that why don't you think bit rationally and understand that x raised to anything. So x raised to कौन सा मिनिमम नंबर होगा, कौन सा मिनिमम नंबर होगा जहां पर आपको ये रोकना पड़ेगा. You automatically understand that, oh, x raised to 0 is going to be 1. X raised to 0 is going to be 1. That is pretty simple for you. And then again you continue further. For that sake, bit complicated example. Bit complicated example. कोई मुझे बताएगा ये example किस बात का है? By looking at this, t raised to n is equal to n minus 1 plus n minus 2. Yes, it is an example of a Fibonacci series. It's the example of a Fibonacci series where any term is addition of two previous terms. Any term is the addition of two previous term. But for any term, 10th term निकालना है तो पिछले दो terms का addition निकालो. उसमें से 9 टर्म निकालना है तो पिछले दो का एडिशन करो. 8 टर्म निकालना है तो उसके पिछले दो का एडिशन करो. एक कहीं ना कहीं पर तो उसको आपका फिबोनाची सीरीज का कोई तो स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए. कहीं ना कहीं पर तो आपने जाके रुकना चाहिए. यस, एब्सोल्युटली रुकना चाहिए. एंड दैट इज समथिंग आई एम टॉकिंग अबाउट
It is like a first and second term, you can say 1. तो सर ऐसा कोई जरूरी है कि 1 से चालू होता है? नहीं. In few books you find that Fibonacci series is starting from 0. So t raised to 0, sorry, t raised to 1 is 0 and t raised to 1 is a 1. So कुछ बुक्स में 0 और 1 लिखा है. In few books probably it is 1 1 लिखा है. कोई फर्क नहीं पड़ता. You decide depending on your requirement. So ultimately you understand. तो सर एग्जांपल क्या है? अगेन यू डू नॉट स्टार्ट डूइंग अ पेपर वर्क कि चौथा टर्म मतलब पिछले दो का एडिशन, तीसरा टर्म मतलब पिछले दो का एडिशन. ऐसे मत करो. कीप इट सिंपल. What is like lowest n value that can be considered? So you said first and second term is something that you worry about. If the first and second term that you worry about, you just make this as your base condition. I hope this is making picture clear. If it is not, still there is one more example. और हर बार आपके पास ऐसे रेडीमेड फॉर्मूलाज होंगे, इसी कोई गारंटी नहीं है. दैट इज द रीजन आई एम सेइंग दैट एक्सप्लेन द प्रोसेस और फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ. जहां पर फॉर्मूला होगा ठीक है, लेकिन अगर फॉर्मूला नहीं होगा तो कहीं ना कहीं तो कुछ तो प्रोसेस होगी. आई एम टॉकिंग अबाउट दैट. लेट्स से यू वांट टू फाइंड आउट प्राइम फैक्टर्स ऑफ एन. या हाउ डू यू फाइंड आउट प्राइम फैक्टर्स ऑफ एन? किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टर निकालना है. व्हाट डू यू डू? किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर्स निकालना है. लेट्स से 24. 24 के प्राइम फैक्टर्स आपको निकालना है. हाउ डू यू फाइंड द 24th प्राइम फैक्टर? सो यू फर्स्ट फाइंड द फर्स्ट प्राइम फैक्टर. लेट्स से इट इज 2. सो आई फाइंड द फर्स्ट प्राइम फैक्टर एंड आफ्टर दैट व्हाट यू डू? 24 का पहला प्राइम फैक्टर है 2. अब उसके बाद में आप लोग क्या करते हो? उसके बाद में बचा क्या? उसके बाद में बचा क्या? उसके बाद में बचा 24 डिवाइडेड बाय 2, लेफ्ट 12. अब आप लोग 12 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हो. एम आई करेक्ट? हेलो. हाँ, देन यू फाइंड आउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12. फिर 12 का पहला प्राइम फैक्टर है अगेन 2. पहला प्राइम फैक्टर है 2. देन अगेन 12 डिवाइडेड बाय 2 इज 6. सो अगेन अभी आप लोग 6 का प्राइम फैक्टर निकालते हो. And this way you continue with the story. So what you are doing is that you get the first prime factor of n, you get the first prime factor of n, and then you repeat the process for the factors of n divided by the prime factor, n divided by that prime factor, and you again the repeat the process. I'm just trying to tell you the formula कि this way you can continue. जानबूझ के मैंने इसका terminating condition नहीं लिखा है. Can you please tell me what should be the terminating condition for this? इसका base condition क्या होना चाहिए? इस recursion का base condition क्या होना चाहिए? What should be the base condition of a recursion? कि कहां पर जाके आपको रुकना है? At what point? Is it 2? I would simply say that अब वैसे आप लोग 2 कर सकते हो. 2 is bit dangerous because let's say for example you started with the number 7. You started with the number 7, you are never going to reach to 2. So I can simply say that either you say factors of 1 is going to be 1. A factors of 1 is going to be 1 and you can skip that 1 because 1 वैसे हम लोग प्राइम फैक्टर में काउंट नहीं करते. But ultimately when a number is divided by itself, it reach to 1. That's it. So this should be kind of your base condition. तो हम लोग हमेशा सोचते हैं कि इसका स्मॉलेस्ट पॉसिबल इनपुट क्या होगा. वो स्मॉलेस्ट पॉसिबल इनपुट 1 है. अब 1 के फैक्टर्स एक ही रहेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता. These are the examples, few examples that I'm telling you. Again, you can take a story one more step ahead. You talk about like a binary search for the moment. अभी हम लोग बाइनरी सर्च के बारे में बात कर रहे थे. तो सर बाइनरी सर्च हम लोग रिकर्सिव मैनर में कैसे सोच सकते हैं? हाउ वी कैन थिंक ऑफ बाइनरी सर्च इन अ रिकर्सिव मैनर? Again, I'm just focusing on how to write the algorithm. How algorithm execute, I will come back to that. How do you repeat the binary search in a recursive manner? So binary search in recursive manner, I said that you start with the array. See that you start with the array. That is good. Once you start with the array, what is your first step? Yes, first step still remains same. You find the middle and check if it is matching. If it is matching, you return. But if it is not matching, if it is not matching, if the element is smaller, if the element is smaller, search in a left subtree. Search in a left subtree. Otherwise, search in a right subtree. So again, you are explaining binary search in terms of binary search. You are explaining binary search in terms of a binary search. What you are saying? You are simply saying that find the middle, compare the middle,
If the middle is matching, that is good. But if the middle is not matching, then either search in a left partition or search in a right partition. By the way, what is your left partition? Your left partition is left to mid minus 1. But what is your right partition? My right partition was probably mid plus 1 to right. I hope you agree. So I'm saying you first find out a midpoint. If this is matching, nothing much to be done. Return from there. Return from there. But if it is not matching, search in a, let's say, left to mid minus 1. Search in this part. Otherwise, search from mid plus 1 to right. Search in a right part. Whatever I am saying, is it logically correct? Is it what you think in a recursive manner? So please understand that recursion, अगर ठीक से देखा जाए, it is one of the easiest way to write a code. Recursion अगर ठीक से देखा जाए, it is one of the easiest way to write the code. We will also discuss what are the pros and cons of recursion. So तब मैं आपको बताऊंगा ही कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है. But still, अभी आप लोग जो logic लगा रहे थे, what was your logic? Your logic was very simple. Your logic was as simple as you are simply saying that mid is equal to left plus right by 2 if key is matching a of m. You already said that return key, but otherwise what you're saying, if key is less than the middle element, if key is less than the middle element, I want to do the binary search once again. I want to binary search once again, but now I want to search that key. I want to search a key into the left partition. And what is my left partition? My left partition is left to mid minus 1. A left partition is left to mid minus 1. Otherwise, I want to search it into the right partition. And what right partition is saying? Right partition, a searching in a right partition is again as simple as what I can say. A right partition कहाँ से कहाँ तक? Mid plus 1 to right. Please note how easy it is. Something that you are doing on a paper, something that you are doing on a paper, something that you are thinking logically, you can try to put it into the code. You can try to put it into the code. And this is something, I always say that this is the biggest advantage of recursion. रिकर्शन क्यों करना है? रिकर्शन जैसे आप लोग सोचते हो, जैसे आप लोग व्हाट इज दैट, दिस इज लाइक ह्यूमन थॉट प्रोसेस. ये सिर्फ ब्रिटिशों की नहीं है, इट्स लाइक इन जनरल इट इज अ ह्यूमन थॉट प्रोसेस, डिवाइड एंड कॉन्कर thought process. So as whatever that you thought of, you try to write the code which is parallel to that. पीपल, मैं नहीं कह रहा हूँ ये स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम है, उनको मुश्किल लगता है, बट जो लोग एक्चुअल काम करते हैं, दे ऑलवेज से दैट रिकर्सिव कोड्स आर मोर इजी टू रीड, easy to read and easy to understand. Easy to read and easy to understand because you are very clear कि आपको exactly करना क्या है, right? Don't worry, हम लोग एक्चुअल बाइनरी सर्च के ऊपर बाद में आएंगे. मैं सिर्फ आपको बता रहा था how to write the recursive function. How to write the recursive function. The typical way, a typical way that you write the recursive function. Take a look at this. Typical way you write the recursive function. अब जो आप लोगों ने factorial का function लिखा था, what is the factorial logic? You simply say that logic आप लोगों ने क्या लिखा है? Oh, mathematically you are written n factorial is equal to n into n minus 1 factorial. As you said so, go ahead and simply say that n into factorial of n minus 1, that is nothing but my result, and I want to return that result. तो जो आप लोगों ने मैथमेटिकली लिखा है वही चीज आप लोग कोड में भी लिख रहे हो, नथिंग ग्रेट. बट एट द सेम टाइम वेट, यू वांट टू आल्सो चेक फॉर द व्हाट इज दैट बेस कंडीशन. व्हाट इज द बेस कंडीशन? वो जीरो फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ पर आप लोग रिकर्सिव कॉल दे रहे हो. द फंक्शन इज गोइंग टू बी कॉल्ड अगेन एंड अगेन. ए फंक्शन इज गोइंग टू बी कॉल्ड अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन. तो कहीं ना कहीं पर तो आपको रुकना पड़ेगा. सर कहाँ पर रुकना पड़ेगा? So you say that is the base condition. If n is equal to 0, 0's factorial is equal to 1. So you see the paperwork that you have done and the code that you have written goes quite hand in hand. Paperwork that you have done and the code that you have written goes quite hand in hand. I hope this is clear. So writing code becomes very easy
विद द रिकर्शन, ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने कहा ना, सिर्फ लोगों का प्रॉब्लम क्या होता है वो भी मैं बता रहा हूँ। अभी इतने सालों से मैं रिकर्शन पढ़ा रहा हूँ, सो आई ऑलवेज फाइंड दैट कि आप लोग बच्चों को ये पढ़ाओ हाउ टू राइट रिकर्सिव कोड, सो दे हैव गॉट अ क्वेश्चन, सर लेकिन ये रन कैसे होगा? हाँ वेट, दैट इज टू बी डिस्कस सेपरेटली, सो यू लर्न वन स्किल एट ए टाइम। सो रिकर्शन पढ़ने का भी टेक्निक वही है, डिवाइड एंड कॉन्कर। So you divide into the two parts. One part, the programming skills. Second part, understanding internals. Correct? If you divide these two things, your life become very easy. The another common problem why people find recursion difficult. Let me tell you that as well. The most common problem that I have seen, people find recursion is tough because they start learning recursion in a very wrong way or for a very wrong problem. Where recursion is most useful, the recursion is most useful in a technique like divide and conquer. In the recursion is most useful in technique like divide and conquer, you start learning recursion on a stupid examples. There are, the ये psychological problem है that you always keep comparing with the alternative way of doing it. So अब जिस किसी को भी ये recursion समझ में नहीं आता, he will always write the code everything, उसके दिमाग में एक क्वेश्चन हमेशा बना रहता है, सर इसको सीधे साधे लूप से लिख सकते हैं, why we are making it that complicated? डेफिनेटली ये आपके दिमाग में, और जब तक आपके दिमाग में ये रहेगा, यू आर नेवर एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द एक्चुअल रिकर्शन कैसे करना है। यू आर ओनली इन अ कंपैरिजन मोड, सर लूप इज बेटर और रिकर्शन इज बेटर। आई वुड से दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक दैट वी आर डूइंग। और मेनी टाइम्स वी स्टार्टेड विद द प्रॉब्लम, आई सीन दैट ऐसे में बीच में जो कुछ कहीं पर तो कोई तो वीडियो चेक कर रहा था, एंड देन इन दैट वीडियो दैट दे वर ट्राइंग टू एक्सप्लेन हाउ टू हाउ टू डू रिकर्शन. The example it was taken was saying that print number 1 to 10 using recursion. Now print number 1 to 10, first of all, is it really a problem worth recursion? Again, ये कर सकते हैं नहीं कर सकते, ये क्वेश्चन नहीं है. Question is that is it really a problem worth recursion? Not really. So you start with such kind of example. So मुझको 1 to 10 using recursion print करना है. So there are always chances you are always thinking in terms of how to convert loop into the recursion. So you're not learning recursion. You are trying to learn how to convert loop into the recursion, and that is the biggest mistake that you are doing. Recursion is not designed for such stupid problems which can be easily solved using loop. तो सर रिकर्शन किसके लिए है? रिकर्शन इज देयर फॉर सम रियली कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम्स जिनको अगर आप लोग लूप से करते हो तो आपकी वाट लगती है. सर कुछ एग्जाम्पल्स आर लाइक क्विक सॉर्ट, एग्जाम्पल इज लाइक मर्ज सॉर्ट, एग्जाम्पल इज लाइक प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, post order using recursion. Now these are few problems for which recursion divide and conquer technique is designed. These are certain example जहां पर divide and conquer technique is designed. So if you at all want to make a judgment, sir loops are better or recursion is better, you should not make it in a very early phase. I would recommend wait till we learn quick sort, till we learn merge sort, till we learn in order, pre-order, post order. And when you learn all of them, at that time you go and compare. You compare कि इसको अगर मैं लूप से करूंगा तो कौन सा अच्छा होगा, इसको अगर मैं रिकर्शन से करूंगा तो कब अच्छा होगा. So when you really solve a problem which is worth that technique, then you should compare. So you compare on a simple problem and you say नहीं नहीं sir इसको तो मैं ऐसे ही solve कर लूंगा. So and you pass a judgment saying that sir loops are very easy than recursion. I guess starting point ही गलत है. तो anyway, तो सर क्विक सॉर्ट से शुरू करो. I cannot, because if I start doing that, then you may not understand a recursion well. Correct? You may understand the application of recursion well, but may not understand recursion as such. So getting back to the point, so I was trying to tell you what is a recursion, how to write recursive function. Just to summarize, how to write recursive function, explain the process in terms of itself. So given any problem statement, so let it be, so मुझको number करने 1 to 10 print करने, can I do recursion? I said yes, you can do recursion provided you think, provided you think how do you explain the problem in terms of itself. How do you explain the problem in terms of itself? So you want to print the number 1 to 10, you want to print the number 1 to 10, even that can be done using recursion. But how? Let's say for example I say that minimum is 1.
मैक्सिमम इज लेट्स से 10। मैं रिकर्शन नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं थिंकिंग एबिलिटीज पढ़ा रहा हूं। बाद में ये मत कहना सर वो आपने डेटा स्ट्रक्चर में थिंकिंग कैसे करना है ये समझाया ही नहीं, वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। रिकर्शन इज समथिंग जो आपको शायद पहले से भी आता है। आई एम नॉट स्पेंडिंग टाइम ऑन रिकर्शन, आई एम स्पेंडिंग टाइम on a technique, divide and conquer technique. So I'm trying to tell you how to divide the problem. Please understand. So I'm saying that I want to print a number 1 to 10. So don't think from the loop perspective. Loop हमको नहीं आता है, and say that 1 to 10 I want to print it like using recursion. So you first understand, given a problem, can I put it like a divide and conquer fashion? Can I put it as a divide and conquer fashion? So I say that you consider the minimum number as 1, maximum number as 10. So you print the minimum number, listen carefully, you print the minimum number, and then now you say that that part is done. Now you look at 2 to 10, I want to print it using recursion. Again you print the minimum number 2, and again you continue further, I want to print 3 to 10 as a recursion. And again you print 3, and again you put a recursive call, I want to print 4 to 10 as a recursion. Now this is a way I'm thinking the same process in terms of divide and conquer. सो यहाँ पर आपके पास कुछ तो मिनिमम है, आपके पास कुछ तो मैक्सिमम है। कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट शुड बी द बेस कंडीशन ऑफ दिस? अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन किया, बेस्ड ऑन दैट कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट कुड बी द बेस कंडीशन ऑफ दिस? टर्मिनेटिंग कंडीशन इसका क्या होगा? टर्मिनेटिंग कंडीशन क्या होगा? Yes, Prasad, that is good. So don't hard code with the number. You simply say that जहां पर आपका मिनिमम और मैक्सिमम सेम हो जाएगा, जहां पर आपका मिनिमम और मैक्सिमम सेम हो जाएगा, so that is something the last number that you have to print, and then you do not want to make a recursive call. I hope you got the point. तो what I'm trying to tell you is that anytime ये आपको इंटरव्यू में होगा, 100% होगा कि some problem statement is been given and then they are asking solve this using recursion. So what they want to see, they want to first see how you are thinking about recursion. आगे जाके ऐसे कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम लोग लेंगे, लाइक फॉर एग्जांपल repeat again, okay, no problem. So what I'm saying is that I'll take up the same example once again. See, कुछ obvious examples है, ये मैंने already बताया, so I'm not repeating the same example. I'm trying to tell you that some examples which are not obvious, some examples which are not obvious, those example how to do it using divide and conquer. Factorial looks very obvious, formula आपके पास recursive formula ही है, तो इसमें explain करने लायक ज्यादा कुछ नहीं है। जो आप लोगों ने सोचा है उसको कोड में कन्वर्ट कर दो, it is very easy. I'm talking about the second angle. What is second angle? कि जहां पर some problem statement is given. Problem statement is given. So what is your first thing? Don't think of don't think of how do you write a code. You first think of given a problem statement. उसमें ऐसा कौन सा part है जो आप लोग explain कर सकते हो in terms of itself. Given a problem statement, उसमें से कौन सा part है जो आप लोग explain कर सकते हो in terms of itself. Like for example, the same example I'm repeating once again. I want to print 1 to 10. I'm printing 1 to 10. I'm saying that don't think in terms of loops. Loops को बाजू में रखो और ये सोचना चालू करो, यार 1 to 10 print करना. The problem statement is print 1 to 10 or print between two numbers. All numbers between two numbers. 1 is the starting and 10 is the ending is an example. कल ऐसा भी होगा कि print 11 to 20. कल ऐसे भी होगा प्रिंट 1 to 100. इट कुड बी एनीथिंग. आई एम सेइंग दैट दो नंबर के बीच के सारे नंबर्स मुझको प्रिंट करने हैं यूजिंग रिकर्शन. सो यू स्टार्ट थिंकिंग हाउ आई कैन थिंक in terms of divide and conquer. So in this particular case, what is the minimum range? What is the maximum range? Minimum range and maximum range. So minimum number you print, and after that, now you want to focus on minimum plus 1 to maximum. So अगर 1 to 10 का एग्जांपल लेते हैं, you print 1 and then you focus on 2 to 10. Again you take 2 out, or you print 2 and then you focus on to 3 to 10. So probably your recursive call will be something like min plus 1 comma max. That will be kind of your recursive call. And this way if you just continue all the way, कहां पर जाके आपको रुकना पड़ेगा? और probably you need to wait. आपको जाके रुकना कहां पर है? आपको रिकर्शन कहां पर रोकना है कि यहां से आगे रिकर्सिव नहीं हो सकता, जहां पर आपका मिनिमम नंबर और मैक्सिमम नंबर इट इज गेटिंग मैच्ड. क्योंकि अभी इसके आगे जाने का कोई मतलब ही नहीं है. एज यू अंडरस्टैंड दिस, that will be the kind of end condition or that will be kind of base condition of recursion.
I hope, Eknath, that is clear. Yes. So this is something I'm trying to explain. तो ऐसे जाके आगे जाके प्रॉब्लम आएंगे क्या? आएंगे. Like for example, how to reverse a linked list. Now, how to reverse a linked list? To be frank, this is not obvious recursive choice. दिस इज नॉट ऑब्वियस रिकर्सिव चॉइस. इसको लूप से आसानी से कर सकते हैं. लेकिन अगर कोई हमें इंटरव्यू में पूछता है कि आई वांट टू सी योर थिंकिंग, सो यू नीड टू फर्स्ट स्टार्ट थिंकिंग ऑफ ओ लिंक लिस्ट को अगर मुझको रिवर्स करना है तो मेरी डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक क्या होनी चाहिए. सो आपको पहले वो टेक्निक पहले खुद को समझाओ, बाद में इंटरव्यूअर को समझाना. एंड देन यू स्टार्ट राइटिंग अ कोड. समवेयर यू स्टार्टेड राइटिंग अ कोड, आप रट्टा मार के आए हो कि डिवाइड क्या होता है, यूजिंग रिकर्शन इंग्लिश कैसे सॉर्ट करना है. यू रिटर्न 4 लाइन्स ऑफ कोड, 4 लाइन में हो जाता है. सो यू रिटर्न 4 लाइन्स ऑफ कोड एंड यू से दैट दिस इज डन. देन interviewer consider that you are the one who are memorizing, you are not the one who can think. Thinking ability. I'm wasting too much of time. I believe I should go back and I should continue further. I believe almost everyone has understood it. How to write the recursive function. And my piece of advice is very simple. When you are writing recursive function, do not think of how it will execute. Now, once you understood how to write the function, how do you do that? That is good. And now go on the next step. What is the next step? Sir, recursion हमने लिखा तो सही, but sir ये execute कैसे होगा? Now it's time that we will talk about ये execute कैसे होगा. Let me first of all take you on a mathematics. Let me take you on a mathematical one. So पहले मैं आपको mathematically बताता हूँ how it is going to be executed, and then we will go on a code. So जब हम लोग mathematically हम लोग कहते हैं 4 factorial is equal to 4 into 3 factorial. Okay, good. 3 factorial equal to 3 into 2 factorial. 2 factorial is 2 into 1 factorial. 1 factorial 1 into 0 factorial, and 0 factorial is equal to 1. Oh, I see all these examples. नाउ कैन यू प्लीज टेल मी, अब एक्चुअल सॉल्व कैसे होता है? एक्चुअल सॉल्व कैसे करना है? एक्चुअल सॉल्व कैसे करना है? ये जो जीरो फैक्टोरियल है इसका रिजल्ट है 1 ना. ए जीरो फैक्टोरियल का रिजल्ट है 1. दैट रिजल्ट ऑफ जीरो फैक्टोरियल यू नीड टू पुट इट इनटू द अर्लियर स्टेप. You need to put in an earlier step. Now you say 1 into 1. A 1 into 1 is still 1. The result is 1. That one, you want to put it into the earlier step. Earlier step, this is 1. The result comes out to be 2 into 1 is 2. You put it into the earlier step. Earlier step, this 2 over here. 2 into 3 is equal to 6. I got the result is equal to 6. You put 6 into the earlier step, and 6 into 4 comes out to be 24. Oh, that is great. I got something simple, 24. This is what my result. This is what my result. By the way, मैथमेटिक्स में जब हम लोग ये सब कुछ करते हैं इसको क्या कहते हैं? Does anyone know? अभी जो कुछ भी मैंने प्रोसेस दिखाया, this process in mathematics, what it is called as? I'm asking you, in mathematics what it is called as? No, this is not permutation combination. This is not permutation combination. This process, you can just go back. I learned somewhere early, back substitution. This method is called a back substitution. The result of next step, you put it into the previous step. Result of next step, you put it in the previous step. Result of next step, you put it in the previous step. And this way you go. This is referred as back substitution. Yes, Ameya, that is correct. ऐसे कुछ एग्जाम्पल अगर आपको चाहिए, कभी डिटर्मिनेंट सॉल्व किया? डिटर्मिनेंट वैल्यू. सो डिटर्मिनेंट वैल्यू इफ यू आर ट्राइंग टू सॉल्व, आई गेस वहां पर एक कुछ तो रूल होता था, क्रैमर्स रूल और समथिंग लाइक दैट. The Cramer's rule, as you try to solve, this is a typical example of like a recursive function. मुझको मैथमेटिक्स में नहीं जाना है, बट यू नो समवेयर डेटा स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स से रिजेंबल करता है, तो जहां पर पॉसिबल एग्जांपल वहां पर मुझको बताने चाहिए. सो मैं बता रहा हूं. अगेन, इफ यू आर एम्बिशियस प्रोग्रामर्स, मैं डबल कोट्स में कह रहा हूं, इफ यू आर एम्बिशियस प्रोग्रामर एंड इफ यू एट ऑल थिंक नहीं सर ये बेसिक प्रोग्रामिंग करके मेरे को बहुत बोर होता है, सो ये मैंने बचपन से किया हुआ है, अब सर मेरे को कुछ नए असाइनमेंट चाहिए, तो जब भी मैं ऐसे कुछ चीजें बताता रहता हूं, सो दीज आर द हिंट्स फॉर यू. If you are ambitious programmer, go ahead, recall Cramer's rule, try to do it using recursion.
So is it simple or not simple? That is the reason I'm saying that I do not give such assignment to everyone. But जिन लोगों को ऐसे लगता है सर क्या ऐसे बोगस असाइनमेंट देते रहते हो, हमें सर अच्छे वाले असाइनमेंट चाहिए, and if you believe that your level is up to that par, go ahead, take it as assignment and start solving. Okay, so it is up to you. I'm just going back. Hey, this is a back substitution and this is what how it's solved. Now मैथमेटिक्स में क्या होता है ये हमको समझ में आ गया कि नेक्स्ट स्टेप का रिजल्ट प्रीवियस स्टेप में जाता है, बट सर कंप्यूटर्स में कैसे होगा? कंप्यूटर में नेक्स्ट स्टेप प्रीवियस स्टेप होता है और ये उसको ट्रैक करना पड़ता है। सर वो ट्रैक कैसे करते हैं? Let me just go back, and the best way I learned this method, from the literacy book, ki the best way to visualize it better, you write it in this step. You write the same function again and again. Like for example, I want to call a function result is equal to factorial of 4. ये कॉल हम लोगों ने कहाँ से किया? ऑब्वियसली ये कॉल हम लोगों ने मेन से किया। सो मेन से जब मैं कहता हूँ रिजल्ट इज इक्वल टू फैक्टोरियल ऑफ 4, लेट अस जस्ट गो अहेड एंड मेक योर फर्स्ट कॉल. This is my first call where n is equal to 4. N is equal to 4. Is it equal to 0? Oh, not really. It is not equal to 0. So what you're making call? You're making call to factorial of 3. You're making call to the factorial of 3. So you making call to the factorial of 3. चलो यहाँ से हम लोगों ने factorial of 3 को फिर से call कर दिया, and where I can say that n is equal to 3. This is for visualization. ऐसे मत कहना and don't ask the stupid question, sir, is it creating multiple copies of function? ऐसा मैंने कुछ नहीं कहा. So you first listen the whole stuff. उसके बाद में अगर कुछ question होंगे तो पूछना. So now I'm saying that this is making call, and just to make it more visible, instead of showing an arrow in place, because if I show the arrow in place again and again, there are likely chances are that you will be confused. So in order to make it more visible and more understandable, I'm saying that let me make a copy of that function so that you can see it well. So हम लोग call कर रहे हैं. So factorial of 4 is making call to the factorial of 3. Okay, that is good. Please note यहाँ पर n का value 4 है and you continued. Now you find that again the condition is false. Again n is equal to 3 and you are trying to make a call to factorial of n minus 1, or it is 2, and you are again making a call to this. Now the value of n is 2. Again this condition is false, and now you are saying that 2's factorial is equal to factorial of n minus 1. A factorial of 1 minus 1, 2 minus 1 is nothing but 1. You give a call, and it is 1. Oh, that is done. And you continue further. You say that if n is equal to 0, or condition is still false, n is equal to 1, and I'm simply saying that factorial of 0, it is there. Oh, yes. And now you compare 0. What is that? If n is equal to 0, condition is true. You want to return 1. But where you want to return 1? Where do I want to return 1? You know the rule that function always return back to the place from where it is called. So जहां पर उसको last time call किया गया था वो वहीं पर return होने वाला है. The result will be ultimately returned to the place over here 1, and then 1 into 1. 1 into 1, the result is once again 1. And that result 1 you are again returning to the previous place. Okay, that is great. Returning to the previous place. चलो यहाँ पर रिटर्न हो गया. ये वहां पर रिजल्ट क्या आया? 1 आया. Now the 1 into 2, यहाँ पर ऑलरेडी 2 है. A 1 into 2 is 2. The result is 2. That you want to return it to the previous place, previous call. So you have got like result 2. 2 into 3. 2 into 3 is nothing but 6. Or result is 6. The result 6 you want to return it back. Or result 6 you want to return it back. So this is where the 6 is. So again you compare 6 into 4 is let's say 24. So 24 is over there, and this 24 ultimately should be returned from where it is called. Where you get the result is equal to 24. That's it. This is how the whole execution does. Don't you think that this is resembling quite the mathematical stuff that we talk about? So जैसे मैथ्स में होता है वैसे ही प्रोग्रामेटिकली भी होता है. Is the flow of execution is clear?
So sir, why you take an example of factorial only? I take an example which people can understand very easily, but I do not advise कि आप लोग हर एक फंक्शन के लिए ऐसे पेपर वर्क करते बैठो, क्योंकि अगर आप हर एक के लिए ऐसे पेपर वर्क करते बैठोगे, इट विल बी वन ऑफ द टफेस्ट जॉब, स्पेशली जब हम लोग एडवांस फंक्शन में जाएंगे, समवेयर यू से क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट और समथिंग लाइक दैट, दिस इज वेरी स्टूपिड वे, एंड दैट इज द रीजन आई ऑलवेज से दैट you learn how to write the function, you understand the first call of function, you understand the recursive process, you understand the base condition, and that's it. That's it. You should stop your journey there. You should not keep on drawing such kind of diagram for every single program that you are doing using recursion. If you are doing that, the likely chances are that you will be more confused. You'll be more confused. Factorial, power, छोटे छोटे function में चल जाता है approach. As the problems become complicated, you start doing it in this way, the likely chances are that you are more confused than more understood. But by the way, one last question about recursion, then we will wind up the recursion. The last question regarding this. The question is, तो सर फंक्शन के मल्टीपल कॉपीज क्रिएट हो रहे हैं क्या? नॉट एट ऑल, फंक्शन के मल्टीपल कॉपीज क्रिएट नहीं हो रहे. तो सर उसको कैसे पता चल रहा है कि मुझको यहां से कहां पर जाना है? सो राइट नाउ आई सेड दैट फ्रॉम हेयर द कॉल इज डन ओवर हेयर इटसेल्फ. Again next time call is done from here itself. Again next time call is done over here itself. So as long as ये अगर बार बार चल रहा है and the same call is made again and again, how does it keep track? ओ यहां से रिटर्न जब लास्ट टाइम खत्म होगा तो यहां से रिटर्न कहां पर होना है, यहां से खत्म होगा तो यहां से रिटर्न कहां पर होना है, यहां से खत्म होगा तो यहां पर रिटर्न कहां पर होना है, सबसे पहले जब यहां से रिटर्न होगा तो यहां पर रिटर्न होना है. हाउ इट कीप ट्रैक? ओ दैट इज अ काइंड ऑफ अ क्वेश्चन, and that is depending on how your execution is done. And how the execution is done, irrespective of programming language, let it be C, let it be C++, let it be Java, let it be C sharp, let it be Node.js, इतने कुछ लैंग्वेजेस तो एटलीस्ट पाइथन, इतने सारे लैंग्वेजेस मेरे को पता है. तो हर एक लैंग्वेज में जब कभी हम लोग इसको कॉल करते हैं, जब कभी फंक्शन कॉल होता है, आई एम नॉट अ रिकर्शन, आई एम नॉट अ रिकर्शन, आई एम सेइंग दैट फॉर एनी फंक्शन कॉल, I repeat, for any function call, there is something called as a function activation record. Function activation record. And the function activation record is created on the stack. Function activation record, और by the way इसको ऐसे और भी एक नाम दिया जाता है, stack frame is created on stack for each, a for each, not function, for each function call. I do not say for each function, I say that each function call. So sir, when it is created, listen, it is created when call when called, when called, and at the same time it is destroyed when function returns. It destroyed when the function is returned, when function is called, when function called, and when function returned. By the way, what that function activation record contains is function activation record या stack frame जो भी आप लोग कहो. So what function activation record contains, इसके अंदर क्या क्या होता है? I repeat, ये irrespective of language है. तो ऐसे मत कहना सर आप जावा पढ़ा रहे हो, सीसी प्लस पढ़ा रहे हो, जितने सारे लैंग्वेजेस है जहां जहां पर फंक्शंस होते हैं और फंक्शन कॉल्स होते हैं, उन हर एक लैंग्वेज में दिस इज एप्लीकेबल. इसको अंदर मेनली तीन चीजें होती है. फंक्शन एक्टिवेशन रिकॉर्ड कंटेंट्स, वन, लोकल वेरिएबल्स, ए लोकल वेरिएबल्स. सो इफ यू टॉक अबाउट द अबव एग्जांपल, यहां पर आर इज ए लोकल वेरिएबल, आर इज ए लोकल वेरिएबल, आई एम सेइंग लोकल वेरिएबल. Second one, the second one, what is second one? Like arguments, you call it arguments, you will call it as a parameters, whatever. So I'm saying that arguments, right? You can say formal arguments, function ke arguments, that is second. And a third thing, you call it as a return address, not return type, it is return address. Return address का मतलब क्या होता है? Return address simply means that address of next instruction, address of next instruction to be executed
when function returns. And this seems to be, this is always the address of next instruction after function call. After function call. So what I'm saying is that अगर ये मेरा मेन का कोड है, हैव लुक एट दिस, अगर ये मेरा मेन का कोड है, जब मैं मेन के अंदर से इसको कॉल करता हूं, जब कभी मैं मेन के अंदर से जब इसको पहली बार कॉल करता हूं, एट दैट टाइम जब मैं मेन से इसको कॉल करता हूं, तो एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, दिस इज नथिंग बट आई कॉल इट द रिटर्न एड्रेस. अब मैं कंप्यूटर हार्डवेयर के लेवल के ऊपर नहीं जाऊंगा, जस्ट अ पॉइंट टू नोट, ये जब मैं कहता हूं एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, आई एम टॉकिंग अबाउट एड्रेस ऑफ नेक्स्ट असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन or address of next machine language instruction. I'm not really talking about address of next C instruction or Java instruction. I hope you got my point. Address of next मशीन लेवल इंस्ट्रक्शन. तो यहां पर जब भी एड्रेस रखा जाता है, वो आपके इंस्ट्रक्शन का एड्रेस रखा जाता है, मशीन लेवल इंस्ट्रक्शन का एड्रेस रखा जाता है. टू बी मोर प्रिसाइज, फॉर द बिगिनर लेवल, यू मे कंसिडर अच्छा यहाँ पर जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है उसका एड्रेस, बट टेक्निकली स्पीकिंग इट इज नॉट द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन. हाँ, yes, somebody is saying that it is program counter. Yes, Pallavi, Namrata, whatever you are saying is correct. It is program counter. मैं purposefully वो words avoid कर रहा हूँ कि program counter और instruction pointer, because you know people start saying that कि सर हमारा कंप्यूटर का बैकग्राउंड नहीं है, हमारा कंप्यूटर आर्किटेक्चर हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह. सो टू अवॉइड the reasoning and from the people, I'm just trying to keep it as a layman's language, address of next instruction to be executed after the function call. I believe this is clear, and if it is still not clear, let me just draw it bit more diagrammatically. I'd say that somewhere you have got, let's say, main. मैं एज्यूम कर रहा हूं कि यहां पर मैंने कहीं पर तो मेन लिखा हुआ है, और इसके अंदर res इज इक्वल टू फैक्टोरियल ऑफ 4 मैंने कॉल किया. अगर res इक्वल फैक्टोरियल ऑफ 4 कॉल किया है, तो यहां पर टेक अ लुक एट दिस. तो फंक्शन एक्टिवेशन रिकॉर्ड जो स्टैक के ऊपर क्रिएट होगा वो कैसे होगा? ओके, 2 मिनट, वी विल सी दिस मच एंड देन वी विल टेक अ ब्रेक. ओके, सो सबसे पहले आई एम सेइंग दैट लुकिंग एट द फर्स्ट वन, सबसे पहला ये पहला फंक्शन एक्टिवेशन रिकॉर्ड, दिस इज ऑफ मेन, एंड इनसाइड मेन आपके जो वेरिएबल्स है, जैसे आपका आरईएस वेरिएबल है या एआरजीसी एआरजीबी वगैरह वेरिएबल्स होंगे, जो आपके वेरिएबल्स होंगे, दोज आर देयर इन फंक्शन एक्टिवेशन रिकॉर्ड. ए बाय द वे, वेयर मेन रिटर्न्स, मेन कहां पर रिटर्न होता है? हु कॉल्स मेन बाय द वे? आपके कोड के अंदर जब आप लोग मेन फंक्शन लिखते हो, हु कॉल्स मेन? यस, मेन इज कॉल्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, और अगर आप लोग जावा में हो देन मेन इज कॉल्ड बाय जेवीएम. ओके, वैलिड. तो जहां पर सर मेन किसको रिटर्न होगा? अगर हम लोग जावा में हैं तो हम लोग कह रहे हैं कि मेन इज कॉल्ड बाय जेवीएम, तो मेन के अंदर जो रिटर्न एड्रेस होगा, ए मेन के अंदर जो रिटर्न एड्रेस होगा, दिस रिटर्न एड्रेस, this return address will be that of JVM, और अगर आप लोग C++ के प्रोग्राम में हो then it will be return address of the operating system. Let it be. Ultimately, भाई आपने ये पहले कॉल कर दिया, और इसके अंदर से look at this, from here you made a call to this. If you made a call to this, what will happen? A new function activation record is created. अब ये जो नया फंक्शन एक्टिवेशन रिकॉर्ड क्रिएट होगा वो किसके लिए हो रहा है? दैट न्यू फंक्शन एक्टिवेशन रिकॉर्ड इज क्रिएटेड फॉर factorial. It is created for the factorial, and inside factorial, have a look at this. Inside factorial, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं? Factorial of 4. तो इसका जो argument है, argument क्या है? n. n is equal to 4 and r is kind of a variable there. It is a result variable that is stored there. Okay, that is good. This is nothing but will be there on a stack when this function is called. But wait, यहाँ पर तो result solve नहीं होने वाला है. From here, the call will be done to this. बाय द वे, एक और चीज, यहां पर जो रिटर्न एड्रेस होगा, इसका रिटर्न एड्रेस क्या होगा? डेफिनेटली इट विल बी रिटर्न एड्रेस ऑफ योर मेन. इट इज गोइंग बैक टू द मेन. ए फैक्टोरियल फंक्शन विल बी गोइंग बैक टू द मेन फ्रॉम वेयर इट इज बीन कॉल्ड अर्लियर. ओके, दैट इज गुड. लेट अस कंटिन्यू फर्दर. व्हाट वी वांट टू सी अब, सो व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट स्टेप? इट इज इन फ्रंट ऑफ यू.
Ab we are over here, we are over here, we are calling this. Now at that time, one more new function activation record will be created. A new function activation record will be created, and that new function activation record, it will have the value of n, let's say kind of 3. Result अभी तक calculate नहीं हुआ है, and where it is going to return? Oh, it is going to return to the earlier call to the factorial. It is going to return to the earlier call to the factorial. I hope you are getting the point. So और एक function activation record is created on the top of it. Okay, that is good. That is good. And let us continue further. From here, if from here again you make a call to the next call. When you made a next call, now what happened? When you made a next call, what happened? Again, one more function activation record is created on the top of this. On the top of this, ये जो function activation record है, ये वापस से factorial का ही है, और factorial का जो record यहाँ पर create हुआ है, वो क्या create हुआ है? वो f of 2, it is created. Okay, that is good. That is also fine. And if this is good, let us continue the same story once again. From here, you are again going to make the next call. You are going to make the next call, next call, next call, next call, next call, next call, where it is n is equal to 1, where n is equal to 1, and with the n is equal to 1, with n is equal to 1, you find that one more function activation record is created on the top of it. On the top of it, where the argument pass is equal to 1. Okay, all right, and it will return back to the earlier call to the factorial. Last one, the last one to go for this. अब यहां से वापिस से एक बार हम लोग किसको कॉल कर रहे हैं? यहां से वापिस से हम लोग किसको कॉल कर रहे हैं? फाइनली वी आर मेकिंग कॉल टू द f of 0. Oh, we are making call to the f of 0, where n will be 0. As n will be 0, now you go back. This is what your basic one, ये already है आपके पास, but ये already आपके पास है, but there is like another function activation record created on the top of it. Created on the top of it, where value of n will be 0. Where value of n will be, where value of n will be 0. That's it. This is done. This is done. So things are all right. Things are comfortable. अब यहां से जब लोग कहोगे कि नाउ आई वांट टू रिटर्न फ्रॉम हेयर टू बैक, सर उसको बैक कैसे जाएगा? बिकॉज इट विल टेक द एड्रेस फ्रॉम हेयर. ए टेकिंग एड्रेस फ्रॉम हेयर, इट विल बी एबल टू गो बैक, एंड एज इट इज गोइंग बैक, हैव अ लुक एट दिस. ये जो फंक्शन एक्टिवेशन रिकॉर्ड है, दैट फंक्शन एक्टिवेशन रिकॉर्ड विल बी डिस्ट्रॉयड. That function activation record will be destroyed and you return back to the previous step. सर प्रीवियस स्टेप से जब हम लोग वापिस से रिटर्न हो रहे हैं, वी आर रिटर्निंग फ्रॉम हेयर टू हेयर. हाउ वी आर रिटर्निंग फ्रॉम हेयर टू हेयर? ऑब्वियसली एट दैट टाइम वी आर टेकिंग द रिटर्न एड्रेस फ्रॉम हेयर. We are taking return address from here, and then we are going to the previous one. But when we are going from previous one, again the function activation record from here will be destroyed. A function activation record from here will be destroyed, and so on and so forth. You continue all the way. So by the time you reach back to the main, so you understand that जो factorial आप लोगों ने call किया था, the factorial function activation record is already destroyed, and finally you are into the main. जब आपका main खत्म हो जाएगा, even mains function activation record will be destroyed, and you go back to the JVM or operating system, whoever is there. You say that your program is terminated. Your program is terminated. I just explained you all the way how recursion works even at the lowest level. Lowest level. तो सर ये सारा नॉलेज जरूरी है. To solve the natural problems of recursion, this knowledge is not required. हाँ, जो tricky problems होते हैं recursion के कुछ कुछ, तो वहां पर this knowledge makes sense. This knowledge makes sense. Is this clear to everyone? I know it might be boring for you, but it was very much part of your syllabus. आपके पास already, आपके साथ already सारा syllabus share किया हुआ है, so you can always go through, so you can find it out. Otherwise, I was not really planning to teach this once again, because ये आपको पहले से आना चाहिए. जिन लोगों को नहीं आता है, so we learn from scratch once again, and step by step understanding how execution is done. And I repeat once again, don't ever say that, sir Java में क्या करना है?
let it be Java, let it be C, let it be C++, whatever, irrespective of programming language, it remains true because that is a way programs are executed in the operating system. अब बाद में कभी ना कभी आपके सिलेबस में ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, तो आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम भी देखेंगे, कभी ना कभी हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम भी देखेंगे। तो जब आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ोगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम में ये सब कुछ आता है, ये सब कुछ आता है, मतलब रिकर्शन नहीं आता है, बट द कंसेप्ट कम, विच कंसेप्ट कम, इट इज अ क्वेश्चन वेयर द स्टैक इज। हम लोग यहाँ पर स्टैक की बात कर रहे हैं, लेकिन स्टैक कहां पर है? ये फंक्शन एक्टिवेशन रिकॉर्ड इज क्रिएटेड ऑन अ स्टैक, फंक्शन एक्टिवेशन रिकॉर्ड क्रिएटेड ऑन अ स्टैक, फंक्शन एक्टिवेशन रिकॉर्ड क्रिएटेड ऑन अ स्टैक, वो ठीक है, बट वेयर इज द स्टैक? ओ वेयर इज द स्टैक? ओ गुड क्वेश्चन नो। स्टैक के ऊपर होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है, वो सब कुछ ठीक है, आई अंडरस्टैंड, बट सर वेयर द स्टैक इज? हाँ, इट इज रन टाइम डेटा एरिया, यस आई नो, बट वेयर इट इज? अगर मैं आपको बताता हूं ए शो मी द स्टैक, हाउ, वेयर? आंसर इज वेरी सिंपल, द स्टैक। नहीं, आप लोगों ने जो कहा आपका आंसर रॉन्ग नहीं है, सिर्फ एक लेवल आपने बीच में छोड़ दिया है। द स्टैक इज पार्ट ऑफ प्रोसेस। व्हाट आई सेड, stack is part of process. Have you heard a word process? Process, आपने कभी तो ये डेफिनेशन रटा होगा, प्रोसेस इज प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। हाँ, process is program in execution. Exactly. I'm talking about the same process. So I'm saying that stack is a part of a process, and obviously process always run in a RAM. Process always run in RAM. So ultimately, this particular stack is also going to be present in RAM. तो सर व्हाट इज प्रोसेस? वो प्रोसेस रैम में कैसे रन होता है? दैट इज अ पार्ट ऑफ योर ऑपरेटिंग सिस्टम। बट ऑलवेज अंडरस्टैंड दैट, ये मत कहना सर वो आपने बोला स्टैक होता है, लेकिन सर ये स्टैक कौन क्रिएट करता है, वो कहां से आता है? करेक्ट, these things are part of your operating system module, तो उसके बारे में मुझको मत पूछना। this should be, I guess, clear. This is all about recursion and understanding of recursion, how recursion works, and etc etc. I believe after this we will take a break for 10 minutes, and after 10 minutes break we will talk about actually writing a kind of a, ये जो बाइनरी सर्च हमने शुरू किया था, जो लॉजिक हमको समझ में आया था, वो लॉजिक हम लोग इसको इंप्लीमेंट करके देखेंगे। we will see how it goes, and after that we will move on to the sorting algorithms, कि which sorting algorithms are there, and then we will see couple of sorting algorithms for the today's session. फिलहाल के लिए it's 10 minutes break. You have any question, please post. Let's get started back. So something that we were discussing was, binary search. And binary search, we are trying to put it like a recursive manner. And what is a recursive manner? We talk about the thought process. The thought process was pretty simple, I guess. Thought process is that you talk about beginning of the partition, you talk about end of a partition, you find the middle, check whether the middle is matching. If it is matching, if middle is matching, then simply return it. So find the middle, and if the middle is matching, simply return it. But if it is not matching, now there are two possibilities. Either it will be into the left partition, or it would be in the right partition. If it is onto the left partition, if it is on a left partition, I need to focus only onto the left area. I need to only focus onto the left area, like a left area, and left area is always from left to mid -1. If it is greater, the element that you want to search, if it is greater, if it is greater, then you continue and try to find out, like a mid +1 to right. So you focus only onto the right partition. So that is what logic. So you find that you focus onto the left partition, or you focus onto the right partition. That is all logic that we need to write it, nothing extra or nothing special that we need to do. चलो आई अंडरस्टैंड दिस, बट जब भी मैंने आपको बताया था कि जब भी कभी हम लोग रिकर्सिव सोचेंगे तो इंपॉर्टेंट क्या है? रिकर्सिव सोचेंगे तो इंपॉर्टेंट क्या है? दो चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन द प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ इटसेल्फ। यस, आई एम एबल टू एक्सप्लेन द प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ इटसेल्फ, बट व्हाट अबाउट टर्मिनेटिंग कंडीशन? व्हाट अबाउट द बेस कंडीशन?
terminating condition or base condition, what should be the condition? Again, you know it very well, you know it very well कि यहाँ पर अगेन आप लोग पेपर वर्क करते करते जा सकते हो। वैसे टू बी फ्रैंक, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग लूप से लिखा था, जब हमने लूप से सॉल्व किया था तो ऑलरेडी हम लोगों ने कंडीशन दिया हुआ है, दैट आल्सो यू ऑलरेडी नो। सो आप लोग वो टर्मिनेटिंग कंडीशन कि जहां पर आपको रुकना है, let's say base condition is equal to right becoming less than left, right becoming less than left is going to be your base condition। ये आपको पता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही किया था। however wait for a minute, अगर आप इसको टेक्निकली सोचते हो, पेपर वर्क कर करके नहीं सर मुझको स्मॉलेस्ट लेवल तक जाना है फिर मुझको जाके देखना है, कर सकते हो। बट इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट आई सजेस्ट और व्हाट आई रेकमेंड इज दैट व्हाट यू डू, what you think of the smallest possible array that you can give it. And what is smallest possible array that you can give it for the binary search? What is the smallest possible array that you can give it for the binary search? It is like only one element, and if there is only one element, there is only one element, it means that left and right will be equal. A left and right will be equal, लेफ्ट एंड राइट विल बी इक्वल, जिसके लिए आपको इसको रन करना है। तो आपको ऐसी कंडीशन ढूंढनी पड़ेगी जहां पर लेफ्ट एंड राइट विल नॉट बी इक्वल, विल नॉट बी इक्वल, और जहां पर आपको रुकना है, एंड दैट अगेन गिव्स यू द सेम कंडीशन। आई होप यू गॉट माय पॉइंट। मैंने कहा आप लोग पेपर वर्क करके वहां तक जा सकते हो और फिर कर सकते हो, बट एज आई से दैट पेपर वर्क विल अननेसेसरी मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। द मोर प्रॉपर वे, जब हम लोग डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम इंप्लीमेंट करते हैं, द मोर प्रॉपर वे इज दैट यू थिंक ऑफ द मिनिमल इनपुट दैट यू कैन गिव। द मिनिमल इनपुट, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, मिनिमल इनपुट दैट कैन बी गिवन फॉर अ बाइनरी सर्च विल बी लाइक अ सिंगल, will be the single array element. So array with only one element, array with one element के लिए आपको वो algorithm execute करना है। array with one element के लिए आपको वो algorithm execute करना है। तो obviously उससे कम जब होगा वहां पर आपको रुकना है। So definitely whenever, see that condition, whenever your array is bigger, it means that your left is smaller than right, left is smaller than right, I definitely want to run the algorithm। but if there is a single element, if there is a single element where left and right both are equal, I still want to execute that। So in which condition I do not want to execute? Where your right is becoming smaller than the left, or you say left is greater than right, kaise bhi likho, choice is yours, choice is yours, and then you implement it। So you go ahead, जो अभी आपने कहा है उसको implement करो। तो सर आप नया फाइल बनाओगे क्या? I really don't think it is required। We will continue on to the same, and I will create a new function, but I'll create a new function। Let's add public static recursive binary search। मैंने जानबूझ के नाम चेंज कर दिया। I'm just calling it as recursive binary search, like a function that I want to write। And what I need to pass? I need to pass the array। अगर आप लोग ठीक से नोट करते हो, you need to also pass the left and you need to also pass the right। Okay, a binary search array and left right, and what I want to write, return, I want to return integer। so what logic you were applying? My logic was very simple। let me first calculate the midpoint। a midpoint, मैं फिर से एक बार, अगर आप लोग नोट किया होगा, जब भी मैं कोड टाइप करता हूं, I talk, trust me, I'm not really talking to you or talking for you, I'm talking to myself। that whenever I'm doing the algorithm, whenever I'm doing the algorithm, I'm thinking and revising, oh, what exactly the process I need to do। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, तो सो दैट जब आप लोग प्रोग्राम टाइप करोगे, सो यू नीड टू ऑल्सो टॉक टू योर सेल्फ। ट्रस्ट मी, दैट रियली इंक्रीज द प्रोग्रामिंग स्किल। ये आपको बिलीव नहीं होगा, बट दैट रियली इंक्रीज व्हेन यू टॉक। यू नो, बहुत बार ऐसे हमको लगता है कि नहीं शायद ये मेरे को पता है। आपको पता है, आपको लगना ये अलग बात है, एंड देन यू आर एबल टू पुट इट वर्बली, यू आर एबल टू पुट इट ऑन पेपर, दैट इज अ डिफरेंट स्किल। इससे थोड़ा सा काइंड ऑफ इंटरव्यू प्रैक्टिस होता है, और लाइक एटलीस्ट मेनी टाइम हमें समझ में आता है कि वॉट एवर दैट वी आर थिंकिंग was not up to the mark। so जब आप लोग verbally बात करते हो, so you are very clear about your own thought process। again मेरी तरफ से suggestion है, choice is yours। हाँ, मिड पॉइंट, बट दिस मिड पॉइंट आई वांट टू कंपेयर की is equal to error of mid। but where is the key? obviously I need to pass the key also as an additional argument that I want to search।
Okay, that is good. And you simply say that return mid. I found the middle element. But if it is not a middle element, then there are two possibilities. या तो ये smaller है या तो ये greater है. You continue further. If key is less than error of mid, key is less than error of mid, then recursively search, into the left partition, and your left partition is nothing but left to mid minus 1. Recursively search into left to mid minus 1. Okay, that is good. Otherwise, कहाँ पर गया? Left to mid minus 1. Otherwise, else I want to search in a right partition. But what is right partition? Right partition is mid plus 1 to right. I guess it is very clear. By the way, लेकिन आपको यहाँ से return क्या करना है? I want to return the index that is searched. Okay, you want to return the index that you have searched. So why don't I just declare one variable? And I collect the index that is coming from the internal call. And then I'm returning the same index. That's it. My code is completed. My code is completed without base condition. Yes, code is completed without base condition. Why don't I add a base condition? Oh, that is very easy. You simply say that when your left is greater than right or right is less than left, ये जो आपको जैसे लिखना है वो ऐसे लिखो. चलो मैंने स्लाइड में वैसे लिखा था. आई एम राइटिंग लाइक दैट. स्लाइड में मैंने क्या लिखा था? राइट इज लेस देन लेफ्ट. In that case, there is nothing much to be done. In this particular case, what to return? What is the meaning of this? What is the meaning of this? This partition itself is kind of invalid partition. You cannot have a partition where right is less than left. Not possible. So it only means that element is not found. Simply say return minus 1. That's it. But by the way, when you call this function, what all things that you need to pass? First of all, you need to pass the array. I understand. जब मेन में से इसको कॉल करोगे तो लेफ्ट और राइट क्या पास करोगे? जब मेन में से इसको कॉल करोगे, what you will pass in a left and what you will pass in a right? A left should be 0. Okay, that is good. But right should be the last index. What is the last index of the array? Last index of the array is always arr.length minus 1. arr.length minus 1. So as you understand that, go ahead and try to call it. Only change, I'm saying the recursive binary search, and now it is taking 4 arguments. Starting with first argument is 0, and the second argument, the right argument, is error of length minus 1. That's it. It's done. So is it finished? Yes, it is finished. So will it work? I believe so. Let's run it. Check it. 33. Oh, yes, it is working. 99. Yes, that is also working. And let me try to work 50. Oh, sorry, not found. So हम लोगों ने एक ही कोड हम लोगों ने linear search में लिखा है. It is giving the same result. Binary search, yes, it is giving the same result. And recursive binary search is again giving the same result. That's why it is printing thrice. I hope you people don't mind doing all these 3 things in a single project, because I purposefully done it in a single project so that it is more readable and more comparable. अगर मैं हर एक के लिए अगर नया प्रोजेक्ट क्रिएट करूंगा, हर एक के लिए अगर मैं नया फाइल क्रिएट करूंगा, in my opinion it is more confusing. Then you need to open like multiple files, to compare. अरे यार ये सही है, वो सही है, या फिर क्या चल रहा है, right? So I believe we need to take care of this. That's it. This is nothing but recursive binary search in front of you. चलो ले go through that. अगर आप लोग आपके पास है, कॉपी पेस्ट करो, रन करो. जिनको टाइप करना होगा वो हम मेरे साथ जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं तभी टाइप करो. उसके बाद में टाइप करोगे, इट विल टेक मच ऑफ टाइम. So good. It look like few people are doing it on the fly with me. That is good. As I say, your typing speed is good. You can do it. If you feel नहीं sir मुझको सुनना है, I need to pay attention, I recommend, that is your choice. But still copy paste and run it. At least at the end. कोड शेयरिंग एक्चुअली जिन लोगों को कोड शेयरिंग चालू हो रहा है वहां से ले लो. बाकी लोगों के लिए मैंने ऑलरेडी उसको शेयर किया हुआ है. गुड.
So sir, is it end of searching? Linear search, binary search, is it end of searching or not really? It is not really the end of searching. There is one more searching algorithm is there, which is very popular by the name of hashing. Hash tables are like another searching algorithm, and that we will be learning bit later, as I already told you. लेकिन वो एक सर्चिंग algorithm है which is more efficient. Linear search का time complexity we talk about like a O of n. Binary search का time complexity we talk about O of log n. And you will be surprised, the hashing time complexity, ideal time complexity of hashing will be O of 1. I said ideal, not a real, but ideally it is O of 1. So it is probably much more faster as compared to this. Anyway, वो जब आएगा टॉपिक तब हम लोग देखेंगे. If this much is clear, should I move on to the next point? Like a maximum time, maximum running time. This one